NAV means net asset value. So NAV of the fund is what? It's a cumulative market value. Cumulative market value of the asset, the total of all the assets, whether it is investment, cash and bank balance, or other receivables, right? Cumulative market value of all the assets of the fund means mutual fund, net of its liabilities. Deduct its current liabilities, whatever outstanding expenses will be there, that you have to minus it. That is what? NAV. So NAV of the fund is what, beta? It's a cumulative market value of the asset of the fund, net of its liabilities. So NAV is a key indicator. What? It's a key indicator of the market value of each unit of mutual fund. Market value of each unit. Per unit value is what? That is what? NAV. So NAV is a key indicator of market value of each unit of mutual fund on a given day. That is why NAV is a value per unit. NAV is what, beta? It's a value per unit of a mutual fund. What is NAV? NAV is a value per unit of a mutual fund. That's it. That you have to remember it. What is NAV? NAV is a value per unit of a mutual fund. Simple fund, right? Per unit. 1 unit price is what? 1 unit price is what? That is NAV. And NAV is calculated every day. Every day NAV calculate hota hai, upar niche hote rehta hai. So in mutual fund, NAV price is used for transaction. If you want to do the transaction, that transaction will be done on the basis of NAV, net asset value. And NAV is calculated on what, beta? Daily basis. NAV is calculated on what, bacha? It is calculated on daily basis after the market close for the day. So NAV calculated daily. Remember it. NAV is nothing but a what? It's a value per unit of a mutual fund. एक यूनिट का प्राइस, म्यूचुअल फंड के एक यूनिट का प्राइस क्या है? दैट इज व्हाट NAV, राइट है? अब 1 यूनिट का प्राइस समझो 10 रुपीज है, राइट है? और आपको 10 यूनिट्स खरीदना है, तो 10 into 10 100 रुपीज दो और 10 यूनिट्स बाय कर लो. दैट इज व्हाट NAV. 1 यूनिट के प्राइस के बेसिस पे कैलकुलेशन जो होगा, दैट इज नोन एज व्हाट NAV. And NAV is calculated on daily basis. NAV is calculated on what, bacha? Daily basis. Okay. So example is what? If the NAV of Reliance Mutual Fund is quoted as rupees 10. If NAV of Reliance Mutual Fund is what? It's quoted at rupees 10, means 10 rupees means 1 unit price is 10 rupees. 1 unit of Reliance Mutual Fund is what? 10. Here it means what? 1 unit of Reliance Mutual Fund is rupees 10. It means that an investors can buy a single unit. It means what? That investor can buy a single unit of the Reliance Mutual Fund for rupees 10. That is what NAV. So NAV, summarized form mein, NAV is what? It's a value per unit of a mutual fund. What is NAV? It's a value per unit of a mutual fund. Simple. Very simple. There is nothing to consider about anything. So it's what NAV. Clear hai? So revise it once again. Sorry. So meaning NAV is what? NAV of the fund is what? Cumulative market value. What, beta? It's a cumulative market value of the assets of the fund, net of its liability. Net of its what, beta? Liability. What is NAV? NAV of the fund is the cumulative market value of the assets of the fund, net of its liability. मतलब जो liability है, जो current liability है, outside liability, outstanding expense, that will be deducted. And NAV is a key indicator. It's what? It's a key indicator of the market value of each unit. It's a key indicator of the what, beta? Market value of each unit of a mutual fund on a given day. And NAV is nothing but a value per unit of a mutual fund. What is NAV? It's a value per unit of a mutual fund. That you have to remember it. Simple fund. Clear? And in mutual fund, NAV price is used for transaction. For transaction, you have to consider this price, means NAV price ke basis pe you will do the transaction.
and NAV is calculated on daily basis after the market close for the day. An example of this is what? If the NAV of Reliance Mutual Fund is quoted at rupees 10, it means 1 unit price of Reliance Mutual Fund is rupees 10. So you can buy units at this price. 1 unit buy करेगा तो 10 rupees में आपको मिलेगा, बाकी आपको जितना न्यू यूनिट बाय करना है मल्टीप्लाई कर देने का. It means that an investor can buy a single unit of the Reliance Mutual Fund for rupees 10. Simple. Clear? पक्का? तो NAV में किसी So NAV formula is what beta? Net asset value is equal to what bacha? Net asset value is equal to market value of fund investment. Fund investment is what? Nothing but your asset plus accrued income. Whatever income will be receivable, that is accrued, right? So accrued income means receivable income means income receivable, that is our asset. That is our asset. अभी income मिलने वाला है तो क्या होता है आपके लिए? Liability होता है क्या? नहीं ना. So that is what asset. So asset का cumulative देख रहे हो? Cumulative means plus. So plus accrued income plus cash and bank balance. Cash and bank balance क्या liability है आपका? It is also an asset, right? It is a fund, mutual fund asset. So what are the formula beta for NAV calculation? What is the formula? Market value of the fund investment plus accrued income plus what beta? Accrued income plus cash and bank balances minus outstanding expenses. What? Current liability. Whatever outstanding expenses will be there, that will be deducted. So देख लिया ना, वो देखो फंडा formula. Meaning में NAV of the fund is the cumulative market value of the asset. So cumulative means what? This is what cumulative. Market value of fund investment plus accrued income plus cash and bank balance. This is what cumulative. Cumulative market value of the assets. Right? A fund investment में market value ही आएगा और बाकी assets plus हो गया. ठीक है? Cumulative of all the assets हो गया. And what? Net of its liability. Net of its liability मतलब अगर कुछ liability रहेगा तो minus कर देना. Liability में कौन सा liability? Current liability. हाँ, समझा कि नहीं? तो वो minus करके अपने को ये value मिलेगा. Divide by, अगर आपको NAV निकालना है तो क्या करना है फिर? Divide by 1 unit का NAV निकालने के लिए divide by number of outstanding units. Divide by what? Number of outstanding unit. Simple example देता हूँ. सुनो, अभी Reliance Mutual Fund के पास fund investment क्या? Fund investment है कितना? समझो हम लोग एग्जांपल लेते हैं, सिंपल एग्जांपल. अगर रिलायंस म्यूचुअल फंड के पास फंड इन्वेस्टमेंट है 80,000. कितना है? 80,000. सी सिंपल एग्जांपल, 80,000 रुपीज. एक्रूड इनकम है बेटा 10,000 रुपीज. एक्रूड इनकम इज व्हाट? 10,000. कैश एंड बैंक बैलेंस है बेटा उसके पास, तो अभी अपना 80 प्लस 10 कितना हो गया? 90. एंड कैश एंड बैंक बैलेंस है बेटा उसके पास 20,000. सो 90 प्लस 20 हो गया 1,10,000. ठीक है? माइनस करंट लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस समझो 10,000 है, तो 1,10,000 माइनस 10 कितना हो गया? 1,00,000. सो ये 1,00,000 आ गया. डिवाइड बाय, अभी समझो उस रिलायंस म्यूचुअल फंड के पास यूनिट्स कितना है? यूनिट्स अभी बेटा उसके पास यूनिट्स है 10,000 यूनिट्स है. टोटल यूनिट्स कितना है उसके पास? 10,000. तो अब वो 10,000 से उसको डिवाइड कर देगा, तो 1,00,000 डिवाइड बाय 10,000, तो कितना आ गया आंसर? 1,00,000 डिवाइड बाय 10,000 किया तो 10 है कि नहीं? बराबर है. तो दैट 10 विल बी व्हाट? 1 यूनिट प्राइस. That 10 will be considered 1 unit price, and that 1 unit price is known as NAV, net asset value. समझा? बराबर है. नेट एसेट वैल्यू वो आ गया पर यूनिट का प्राइस. ओके, पर यूनिट निकालने के लिए व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू डिवाइड इट बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट. सिंपल फंडा, राइट है. एंड हियर इट इज कॉमन दैट असेट्स माइनस लायबिलिटी. असेट्स हो गए माइनस लायबिलिटी में कौन सा? आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज लाइक करंट लायबिलिटीज, ऑल दैट. डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स. So this formula everyone have to remember it because very important. So for NAV calculation, what to do? All the value, market value of the assets, fund investments, whatever will be there, asset minus outstanding liability, current liability minus कर दो, जो भी current liability है minus it, divide by number of outstanding units. Number of outstanding units कितना है म्यूचुअल फंड के पास, उससे डिवाइड कर दोगे तो एक यूनिट का प्राइस मिलेगा. 1 unit price you will get, and that 1 unit price is known as what? NAV, net asset value.
ठीक है, नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट। क्लियर? तो ये फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए बेटा। एंड आफ्टर दैट other formula, one other formula is there, that is formula for calculating closing units. What formula for calculating what beta closing units? समझो अगर क्वेश्चन में आपको ये नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स करंट ईयर का यूनिट्स नहीं दिया, if this number of outstanding unit is not given in the question, so what to do, how to calculate it, number of outstanding units, how to calculate? So for that, formula for calculating closing units, number of outstanding units at the closing, if not given. If number of outstanding units at the closing means current year के last date पे, if not given, right है, current year का last day, या फिर आप daily calculate होता तो क्या बोलोगे, daily, right है? तो if closing unit is not given, so how to calculate closing units? So closing units calculate करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला यूज करने का, ओपनिंग यूनिट्स, जो लास्ट यूनिट होगा वो ओपनिंग यूनिट्स, प्लस व्हाट टू डू, यूनिट्स सब्सक्राइब, व्हाट बेटा, यूनिट्स सब्सक्राइब कितना हुआ है, राइट है, माइनस यूनिट्स सोल्ड, रिडीम कितना किया, राइट है. सो व्हाट विल बी द क्लोजिंग यूनिट्स, ओपनिंग यूनिट्स प्लस यूनिट सब्सक्राइब in the form of purchase, ठीक है, यूनिट सब्सक्राइब माइनस यूनिट सोल्ड या रिडीम. तो म्यूचुअल फंड देखेगा कि ओपनिंग यूनिट्स कितना है, प्लस सब्सक्राइब कितना हुआ है, कितना है उसके पास, माइनस उसने कितना रिडीम कर दिया, तो ये करके उसको अपना क्लोजिंग यूनिट्स मिलेगा, राइट है. मालूम पड़ा कि नहीं, समझा क्लोजिंग यूनिट्स कैसे मिलेगा. अभी ओपनिंग यूनिट समझो लास्ट, उसके पास 8000 ओपनिंग यूनिट पहले से पड़ा है, उसके बाद सब्सक्रिप्शन आया उसके पास 3000, ठीक है, तो कितना हो गया 11000, उसमें से उसने रिडीम कर दिया 1000, तो कितना हो गया 10000. सो 10000 विल बी द क्लोजिंग यूनिट्स. और ये फॉर्मूला याद रखने का, क्योंकि किसी क्वेश्चन में ये नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स डायरेक्टली नहीं दिया रहता, सो दैट इज व्हाई यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला. सो दीज टू फॉर्मूला आर वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू रिमेंबर दिस टू फॉर्मूला, आपका 15 मार्क्स कोई रोक नहीं सकता. No one can stop you to score 15 marks, right? So याद रखना फॉर्मूला, NAV का फॉर्मूला is what is the formula of NAV? Market value of fund investment plus accrued income plus cash and bank balance minus current liability. What बेटा, market value of fund investment plus accrued income plus cash and bank balance minus current liability. हटा दो current liability, why बेटा, माइनस करके, ऐसे नहीं, ठीक है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, राइट. इफ इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, सो यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला. दैट क्लोजिंग यूनिट्स के लिए व्हाट इज द फॉर्मूला, ओपनिंग यूनिट्स प्लस यूनिट सब्सक्राइब माइनस यूनिट्स रिडीम, so this is the formula, and this formula everyone have to remember it. समझा? चलो अब बोलो जरा फॉर्मूला, फटाफट आंसर दो मेरे को फॉर्मूले का. एनएवी का फॉर्मूला क्या है? यस, आई कैन सी, वेरी नाइस. हाँ, और भी आंसर चाहिए. एनएवी का फॉर्मूला फटाफट ऐसे लिख के दिखाओ मेरे को, ठीक है. हाँ, और जिसको बोलना है वो बोल सकता है अनम्यूट करके. एनएवी का फॉर्मूला, इफ एनीवन वांट टू स्पीक तो दे कैन स्पीक. हाँ, यस, मार्केट वैल्यू, जो भी मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट्स का प्लस कैश एंड बैंक बैलेंस माइनस करंट लायबिलिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स. वेरी गुड, शाबाश. हाँ, एंड वो क्लोजिंग यूनिट का फॉर्मूला क्या है? क्लोजिंग यूनिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है ओपनिंग यूनिट्स प्लस यूनिट सब्सक्राइब माइनस यूनिट्स, याद रखना. चलो, किसी को बोलना है? एनीवन वांट टू स्पीक? Sir, NAV is equal to Yes. market value of the fund's investment plus accrued income plus cash bank balance minus Very current good. liabilities divided by number of outstanding units. Shabash beta, very good. And then And how formula, to calculate closing units? Formula. Yes. Shabash Saurav. Well done beta, well done. And I can see so many answers in the chat box also. Very good beta. तो ये फॉर्मूला याद रखो. एवरीवन हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला.
if you remember this formula, you can easily solve any of these sums. Easily. No need to worry about that. You can easily solve it. Everything. Okay? तो चलो बेटा अभी सुनो. Now I have given what I have sent you on WhatsApp group. See question I have sent you. राइट है. अब वो एक क्वेश्चन देखो, उसके बेसिस पे हम लोग ये फॉर्मूला समझते हैं. राइट है. तो आ जाओ. क्वेश्चन दिख रहा है सबको? मैं भी इधर दिखा रहा हूं क्वेश्चन. सी हियर. दिखा? सो दिस इज द क्वेश्चन. देखो वेरी सिंपल. और मैंने आपको ग्रुप पे भी भेजा है दिस क्वेश्चन. सी व्हाट इज गिवन. सी एवरीवन, अ फंड इन्वेस्टमेंट एट मार्केट वैल्यू टोटल 700 crores. अभी बेटा फंड इन्वेस्टमेंट है, फंड का इन्वेस्टमेंट है. फंड मतलब म्यूचुअल फंड. म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट कितना है अपना? 700 crores का है. कितना है? 700 crores. ठीक है. राइट. 700 लिखने का 70 लगा देने. क्रोर्स में 70 होता है, याद रखो. सो अ फंड इन्वेस्टमेंट एट मार्केट वैल्यू टोटल रुपीज 700 crores. टोटल लाइबिलिटी स्टैंड एट रुपीज 50 lakhs. टोटल लाइबिलिटी कितना बेटा? 50 lakhs. तो क्या करना है? फंड इन्वेस्टमेंट 700 crores असेट हो गया आपका. इन्वेस्टमेंट तो बेटा इन्वेस्टमेंट इज व्हाट? असेट ना. सो इन्वेस्टमेंट 700 crores माइनस व्हाट? लाइबिलिटी. लाइबिलिटी माइनस कर दो. लाइबिलिटी कितना है बेटा? 50 lakhs इज योर लाइबिलिटी. राइट. एंड नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट इज व्हाट? Number of outstanding unit is what? 28 crores. So divided by 28 crores. Divided by 28 crores, then you will get your answer easily. That is what your NAV. समझा? तो आपको उससे अपना NAV मिल जाएगा. It's very simple. बराबर है? It's very simple. Very good. आंसर भी दिखा मेरे को. Very nice बेटा. शाबाश. तो ये एक सम सॉल्व करने का. फिर उसके बाद इधर देखो नीचे. ये अभी मेरे साथ सॉल्व करने का है तुम लोग को. ठीक है. तो सब लोग अपना कैलकुलेटर लेके बैठना. अभी देखो इसमें क्या है, इसलिए दोनों क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर देता हूं मैं. ओपन एंडेड फंड विद 20,000 यूनिट्स आउटस्टैंडिंग. अभी 20,000 यूनिट्स आउटस्टैंडिंग है, मतलब नंबर ऑफ यूनिट आउटस्टैंडिंग इज 20,000. हैड द फॉलोइंग आइटम इन इट्स बैलेंस शीट. इन्वेस्टमेंट बेटा, इन्वेस्टमेंट क्या अपना असेट है. असेट, अदर असेट भी असेट है. तो 2 लाख प्लस 40 कितना हो गया? 2 लाख 40 माइनस करेंट लाइबिलिटी 50,000 माइनस कर दो. ठीक है. 2 लाख 40 माइनस 50 कितना हो गया? 1 लाख 90. डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स 20,000. तो डिवाइड कर लो, यू विल गेट योर फंड एनएवी पर यूनिट. दैट्स सिंपल. राइट. तो अभी सब लोग अपना नोटबुक निकालो. पहला सम और ये दूसरा सम मेरे साथ सॉल्व करो. आ जाओ. वेरी गुड. आई कैन सी द आंसर. वेरी नाइस बेटा. वेरी नाइस. शाबाश. चलो. सो बुक में सब लोग सॉल्व करो स्टेप बाय स्टेप. एग्जाम में प्रेजेंट कैसा करने का वो भी देख लो. डायरेक्ट देख लो कैसे एग्जाम में दिखाना है, मार्क्स लेना है. तो अभी सब लोग अपना व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने क्वेश्चन भेजा है, उधर निकल के रखो. फिर मैं सॉल्व कर रहा हूँ व्हाइट बोर्ड पे. तो सब लोग ध्यान देना बेटा इधर. सो नाउ आई विल सॉल्व हियर. सो स्टेप बाय स्टेप एवरीवन सॉल्व. स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ सॉल्व करना. ठीक है. वो स्टेप भी देखो क्योंकि स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. स्टेप के हिसाब से मार्क्स मिलेगा आपको. तो आ जाओ. So for that I'll share my screen, whiteboard. चलो बच्चा लोग. So whiteboard option, here it is. Now you can see here whiteboard option on my screen. चलो अभी सॉल्व करते हैं. तो सॉल्यूशन मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो. ठीक है. अब बेटा सॉल्यूशन के लिए कंपनी नेम इज नॉट गिवन ना, तो कोई बात नहीं. चलो सबसे अगर कंपनी का नाम दिया रहेगा तो यू हैव टू राइट एट द टॉप कंपनीज नेम. एट द टॉप यू हैव टू राइट व्हाट बेटा? बिफोर सॉल्विंग द सम यू हैव टू राइट कंपनी नेम. इफ कंपनी नेम इज गिवन देन राइट. इफ कंपनी नेम इज नॉट गिवन so no need to write it anything. Directly you can start your sum. Okay. So right. So NAV is equal to so what are the data which is given? Use in the formula. That is, first it is what? Market value of fund investment is given. So market value
Write down here. Market value of what? Fund investment. And what is given? Minus current accrued expenses है ना बेटा, ठीक है, minus that is current liability, accrued expense. What is given? See the question, everyone. That first question, everyone see what is given. That is what fund investment is given, and second one is what given. What is the second item? See, देखो क्वेश्चन, देखो मालूम पड़ेगा, पूरा क्वेश्चन देखने का ध्यान से. 700 करोड़ आपका मार्केट वैल्यू ऑफ फंड इन्वेस्टमेंट है और 50 lakhs लाइबिलिटीज है. तो लाइबिलिटीज दिया है, तो लाइबिलिटीज इज व्हाट? इट्स अ करंट लाइबिलिटी. सो जो भी यूज होगा फॉर्मूले के बेसिस पे वो दिखा रहेगा. डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स. और बेटा नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स, राइट है, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स. सिंपल सिंपल.